not all the events of the past, but those events which have great impact on future social, economic and political life of humanity. लिखना है इसको, लिखते चलना है। हम लोग ऐसे फील कर रहे हैं जैसे संसद में बैठे हों, लिखते चलना है। So, what is history? First definition is only those events of the past which have great impact on future social, economic and political life of humanity. So not all the events, some events. तो हम लोगों ने मार्क कर लिया कि we will not go to study everything, but we will go to study some selective events which have great impact on future social, economic and political life of humanity. Right? Otherwise, by that definition, तो history तो endless हो जाएगा, never ending subject. We have to keep certain parameters open. तो ये तो first definition है. दूसरा definition क्या है? History is what historian says. ठीक है ना, जो historian बोलता है वो हम लोग पढ़ते हैं. History is what historian says. But suppose, for example, देखिए, in Karol Bagh, wherever you excavate, you find this. At many places. ठीक है, रोड पर, झील में जो आगे बनता है पानी वाटर लॉगिंग से, ठीक है, wherever you excavate, you find this. So she is a very genius scientist, archaeologist, and she decided to take it. And she is very curious to know about it. So she went to laboratory and find the carbon dating and found the date that this date is falling around 3000 BC. So she became more curious. She had found a very antique thing which is 5000 years back. So she finally decided to analyze it. She found that this is a pointed from one end. If we can fix in the wall, we can hang jacket over there. This is a fact of the 3000 BC. As archaeologist, she defined it. She analyzed it. Scientifically analyzed it. That the people of Karol Bagh in 3000 BC were using an instrument which could be used to hanging the shirt. Right. History is what? Historian said. Right. So she also asked her, please transfer it to me. मैं भी genius हूँ, मैं भी intelligent हूँ. So उसको transfer कर दिया. And she had put her best brain inside this fact. And finally she found that if I will hold like this, we can write. Same fact, another historian, and she said that the people of Karol Bagh were using an instrument which could be used for the writing purpose. History is what? Historian said. History is what? Scientific analysis of the fact by the historians. ठीक है, अब देखो ये बच्चा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. ये बच्चा बोला कि हमें भी ट्रांसफर को, हमें भी पूरा मोहल्ला इंटेलिजेंट बोलता है, तो इसको ट्रांसफर कर दिया. इसने खूब देखा, चाय पी पी के देखा. And finally she became very angry and she threw it out. बाहर फेंका. बोला फालतू बकवास कर रहे हो, कुछ भी नहीं है, यूजलेस है. Same fact, this historian made it irrelevant. So historians making the relevant fact historical, historians making the irrelevant fact unhistorical. Crores of the facts are there in the ancient India. Some fact in our syllabus, some fact garbage. Right? History is what? Historian says. History is what? Scientific analysis of the fact by the historians. Okay? Scientific analysis in chronological order of the fact by the historians. Historians making the relevant fact historical and irrelevant fact unhistorical. So what is relevant and what is irrelevant? They will decide and they will tell us, and I will tell you in the class. History is what?
historians said. So, history is scientific analysis of the fact. History is scientific analysis of the fact by the historian, by the historians, by the historians. Historians making the relevant fact historical. Historians making the relevant fact historical and irrelevant fact unhistorical. Unhistorical. Relevant fact historical and irrelevant fact unhistorical. Okay. So scientific analysis of the fact by the historians. Clear hai na? Okay, fine. So I told you that when we should start our history. This is just some of the big issue that we face. In anthropology, there is no debate regarding the ape ancestor of human. Ever since Darwin, he wrote a book, Origin of Species. In this book, Darwin laid the theory of ape ancestor of human. Since then, debate started. How to connect the ape and human? That debate had started. So ever since Darwin wrote a book. फिर डार्विन ने एक और किताब लिखी, Origin of Descent of Man. So Descent of Man में डार्विन ने बोला कि since majority of ape live in Africa, therefore we should look our ancestor in Africa. So after the call of Darwin, majority of scientists and researchers, they went to Africa. Since most of the research is conducted in Africa, therefore most of the evidence related to the human evolution we have from Africa. ठीक है, अभी भी आप जानते हैं ना, द हिंदू में you will find so many articles related to the human evolution, and that actually article are connecting the things to the Africa. Why? It is not coincidental. इसलिए कि सारा रिसर्च वहीं हुआ है ज्यादा से ज्यादा. Since hundreds of the years it's going on, that research is conducted in Africa. Otherwise, other continents में research नहीं हुआ. So we most of the things found from Africa. ये Darwin, after the call of Darwin, Darwin wrote a book, Origin of Species and Descent of Man. In first book, he said that ape is the ancestor of human. Unchallenged theory, synthetic theory. Then second is that the descent of man, that since majority of ape live in Africa, therefore we should look our ancestor in Africa, and after the call of Darwin, the researches were conducted in Africa. Fine. And most of the evidences related to the human evolution we have from Africa. Okay, so Darwin, how he connected and how scientists connected the thing. There was an ape, Drypithecus. This ape was a huge, massive ape, buffalo type ape, cylindrical ape. This Drypithecus ape was found in Miocene era. Miocene period, this Drypithecus ape was found. Miocene period. So, researchers said one branch of the Drypithecus lived in forest. There was change in the climatic condition, there is a change in the forest condition. So the branch which lost the forest and came in the plain area, in order to do hunting, they started jumping on 2 foots. They started jumping on legs. So leg became more important for them. Earlier they were doing brachiation, एक डाल से दूसरे डाल पर jump करता, brachiation. But now they trying to stand on 2 legs, because in order to do hunting they had to see far away. Right. So because of that, maybe the branch which moved to the plain area, they started jumping on 2 foots, and thereafter they became bipedal.
ठीक है. So how knuckle walker turn into bipedal? This may be the one theory to explain. And now this ape became bipedal. अब आप एप को ऐसे खींच के खड़ा कर दीजिए, जैसा एप दिखेगा. द ह्यूमन वॉज ऑल्सो लुकिंग लाइक द सेम. और उसको क्या बोलता है, साइंटिस्ट ने एक नया नाम दिया, ऑस्ट्रेलोपिथिकस. ऑस्ट्रेलोपिथिकस. So Australopithecus, which is actually connecting link from Dryopithecus to Australopithecus, मतलब knuckle walker to bipedal हुआ. तो knuckle walker to bipedal, Australopithecus, it is said that it is the first known bipedal on earth. Bipedal on earth. First known bipedal on earth. दो पैर पर चलने वाला था. शेप साइज बिल्कुल सेम है. बंदर को खींच के खड़ा कर दीजिए, जैसा दिखता है बिल्कुल वैसा ऑस्ट्रोलोपिथिकस दिखता था. सो इट इज अ फर्स्ट नोन बाइपेडल ऑन अर्थ. ऑस्ट्रोलोपिथिकस दो पैर पर चलने वाला है. ये देखो क्या है हालात यहां पर. ये फर्स्ट नॉन बाइपेडल ऑन अर्थ. अब हिस्ट्री में या ह्यूमन एवोल्यूशन में द बिगेस्ट मिसिंग लिंक इज, अभी तक we are not able to connect कि when exactly knuckle walker turn into bipedal. But केवल connection यही है कि this bipedal evolved from this knuckle walker, right? और when, it is the biggest mystery in history. अभी तक scientists are not able to find the link when exactly it had happened. तो मैंने बोला कि this is a first known bipedal on earth. तो इसका जो फिजिकल फीचर देखोगे ना, तो लेग जो है वो शॉर्टर है. एप का लेग शॉर्टर होता है, हैंड्स लॉन्गर है. फिजिकल फीचर यही है. ये शेप जो है जॉर्ज का, ये ह्यूमन का पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक होगा, और एप का यू शेप होता है. तो इसका शेप अभी भी जो जॉर्ज का शेप है वो यू शेप है. ठीक है ना, यू शेप है. ठीक है. उसके बाद दूसरा था कि ये जो मोरर है ना, मोरर, इस पर ह्यूमन में वाई बना होता है, और रोटी को एकदम खटाखट काटने के लिए शानदार शार्प रहता है, वो वाई बना रहता है. और एप का फ्लैट होता है. तो इसका जो टीथ है वो भी फ्लैट है, उसमें कोई कस पैटर्न नहीं बना हुआ है. So that is how the Australopithecus was bipedal, but more or less feature was resembling the ape. ठीक है. फिर ये देखो, ये cranial capacity है, right? Cranial capacity ज्यादा है Australopithecus का Dryopithecus से. बोलते हैं कि cranial capacity जिसका सबसे ज्यादा, उसका IQ सबसे ज्यादा. सो ऑस्ट्रोलोपिथिकस वाज मोर इंटेलिजेंट देन ड्रायोपिथिकस. बट ये मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि जिसका सर बड़ा हो वो इंटेलिजेंट होगा. ये गलत बात है. ठीक है ना, कि इतना बड़ा माथा है पक्का इंटेलिजेंट होगा, ऐसा नहीं है. तो क्रेनियल कैपेसिटी पर यूनिट बॉडी वेट ये मार्कर होता है, और ये ह्यूमन में हाईएस्ट होता है. Right, so cranial capacity per unit body weight is more in Australopithecus compared to Dryopithecus. So Australopithecus was more having more IQ, more intelligent. और highest ये होता है human में, और इसीलिए human most intelligent. So cranial capacity per unit body weight. तो इससे काफी अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इंटेलिजेंट हो रहा है ये धीरे धीरे Australopithecus. फिर क्या हुआ कि देखो, जब नकल वॉकर है, गाय का बच्चा, बकरी का बच्चा, चूहा का बच्चा, नकल वॉकर, विद इन 3-4 hours, 3-4 days, 3-4 months, they became independent. और आदमी का बच्चा 3-4 साल इंटेंसिव केयर में रहेगा, और कुछ बच्चा तो 32 साल तक रहता है, जब तक यूपीएससी का अटेम्प्ट रहता है. तो आदमी का बच्चा इज वेरी डिफरेंट.
सो कहने का मतलब यह है, इसको देखना ठीक से समझना इसको, कि दिस लेडी ऑस्ट्रोपिथिकस विच बियर्स द बेबी, तो ये जो लेडी है प्लस बेबी will not able to, this lady will not able to leave the baby and to go to the forest to collect the food, because ये mentally and physically immature baby है ये, and it's very difficult for her to live alone and then will go to the field. So therefore this both will become helpless. So how they will survive? They needed third party assistance, और third party lady नहीं होगी. So male will come forward and the male will come forward to help this lady plus baby, और ये जो कॉम्बिनेशन बनता है इसको बोलते हैं फैमिली, मेल प्लस फीमेल बेबी, फैमिली, राइट. सो दिस इज अ रीजन व्हाई द ओनली बाइपेडल हैड द फैमिली लाइफ, एंड दिस इज द रीजन व्हाई मैन इज कॉल्ड सोशल एनिमल. ठीक है, सोशल लाइफ या फैमिली लाइफ. सो मैन, फैमिली इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, फैमिली इज अ पार्ट ऑफ कल्चर. तो ठीक है, तो बोलते हैं ना बच्चे कि मैन इज अ सोशल एनिमल, सो ओनली मैन इज अ सोशल एनिमल. डिस्कवरी चैनल वाले तो चींटियों का भी फैमिली बना देते हैं ना, एंड्स का भी, बट हियर मैन इज अ सोशल एनिमल. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ बाइपेडलिज्म, राइट, बिकॉज ऑफ बाइपेडलिज्म family life is started. Because of bipedalism, cultural life had started. So biological evolution and cultural evolution is almost a parallel thing. जितना ज़्यादा biologically evolved, उतना ज़्यादा culturally evolved. Right? थोड़ा समझने की बात है, अभी सिलेबस पर नहीं आएंगे सिलेबस पर धीरे धीरे, but let us have some basic fundamentals. So why man is called social animal, and how much biologically evolved, that much culturally evolved. So in course of human evolution, biological evolution and cultural evolution is almost simultaneous, एकदम पैरेलल चलता है. ठीक है, वैसे तो ह्यूमन इवोल्यूशन में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, जान के भी क्या कर लेंगे, बट ह्यूमन बनने के बाद क्या करना है ये जानना जरूरी है. ठीक है ना, तो इसलिए कि कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे चेंज हुआ, इनको पढ़ना पढ़ने दीजिए. हमारा काम है सीधा एंशिएंट इंडिया पर करके प्रीलिम्स पास करना, मेंस इंटरव्यू मसूरी टारगेट. बट एनीवे थोड़ा बेसिक्स जानना चाहिए. तो ह्यूमन इवोल्यूशन में क्या है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड कल्चरल इवोल्यूशन बोथ आर पैरेलल थी. अब नेक्स्ट बात है प्रॉब्लम ऑफ मेटिंग. बाइपेडल द फिजिक एनाटॉमी जो है दैट इज मींट टू हैव मेटिंग विद द बाइपेडल. तो मेटिंग इन द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड होमो, राइट. सो देयरफॉर ऑस्ट्रोपिथिकस विल टर्न इनटू होमो, and Homo erectus and Homo sapiens. So the biological name of us is Homo sapiens, and that is how the evolution things had went. और ये जो Homo sapiens है, यूज एंड डिसयूज का थ्योरी हुआ तो legs became longer compared to hands. Cranial capacity per unit weight became huge, बड़ा हो गया वो. So वो इंटेलिजेंट हो गया. अब कोई भी ऐप बना देता है 4 साल का बच्चा भी कोचिंग में एडमिशन लेकर के, तो ठीक है ना, तो इसका मतलब इतना इंटेलिजेंट हो गया ह्यूमन. तो बिकॉज क्रेनियल कैपेसिटी पर यूनिट बॉडी वेट बिकम मैक्सिमम. डन. तो ये सब चीजें समझने की बात थी. बट इंटेलिजेंट ह्यूमन क्या बनाएगा, मैंने बोला ऐप बनाएगा, बट दे वर मेकिंग टूल्स, एंड टूल्स मेड अप ऑफ स्टोन. सो जब से स्टोन यूज किया टू मेक टूल्स, it is now the beginning of Stone Age. So from where actually our syllabus is. ठीक है, तो not man became human, not ape became man. Ever since human started raw material to make tools, and that is the beginning of the history.